So where we are? We are at home. We are in exercise 17B. Okay, and we are dealing with speed, distance, time. Speed, distance, and time. Okay, no issue. This is for class 6. Speed, distance, time. And here we have number 1, which says that a train 180 meter long. So the length of the train is given as how much? 180 meter. Very good. And it's running at a speed of, so they have also given you speed of 90 किलोमीटर पर आवर. ये तो भाई ठीक बात नहीं हुई, because they have given you the length in meters and speed in kilometer per hour. अच्छा, एक just wait for a minute. What are they saying? They are saying that how long it will take to pass a railway signal. So how long? They are asking you the time. Okay, fine. I will find out the time also. Time to pass the railway signal. Time to pass the railway signal. Okay. Now imagine this is a signal. Okay, this is a railway signal, and this is your train. This is the railway signal, and I hope you can see this. This is the railway signal, and this is the train. Now the train, in order to pass this particular railway signal, will have to cover its own length. जब तक ये पूरा लेंथ अपना कवर नहीं करेगा, तब तक the train will not pass the railway signal. Instead of railway signal, it can be lamp post. It can be a man standing on the platform. So even if a man is standing on a platform, then the train will have to cover its own distance. Okay? This means the distance, though this is the length of the train given as 180 meter. So the distance covered by train is equal to 180 meter. और ये क्या बात हो गई भाई? Speed. And what had I taught you in the previous class? I had taught you that in order to convert kilometer per hour to meter per second, you will have to multiply this by 5/18. Please look at the previous video. You have to multiply by 5/18. Why? 5 on the top, because you are converting it to a lower unit. आजा, तो फटाक से करेंगे हम लोग यार. Speed is equal to 90 multiplied by 5/18 meter per second. So 18 5 बार में is equal to 25 meter per second. So you have got your speed as 25 meter per second and the distance as 180 meter. Can you find out the time? आजा बेटा, टाइम निकालते हैं. Time is equal to distance by speed. Distance is equal to 180 by 25 seconds. Your time, you will get your time in seconds. So let us now calculate. So when you will calculate this, what will you get? You will get this value, that is equal to how much? 36/5 is equal to 71/5 seconds, or you can say as 7.2 seconds. Any issue? No problem is there? Okay, so remember that when a train passes a railway signal, this means the train will cover its own length. काम खत्म. ठीक है, आगे बढ़े. They say a train whose length is, अब railway signal खत्म. Now the train is going to pass a telegraph pole. ठीक है यार, railway signal, whether it is a railway signal, नहीं railway, एक मिनट बेटा रुको. हाँ, railway signal हो या नहीं तो you yourself is there, a man
standing on the platform और lamp post हो all, in order to pass any one of them, the train will cover its own length. है कि नहीं? So the train whose length is 150 meter, the length of train is given, this is number 2, length of train is given as 150 meter, and it passes a telegraph pole in 10 seconds. So time taken is equal to 10 सेकेंड. फाइंड स्पीड. तो लो भैया हम स्पीड निकाल लिए. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस इज इक्वल टू हाउ मच? 150 मीटर. टाइम कितना बाबू? 10 सेकेंड्स. ठीक. Shall I cancel? Is equal to 15 meter per second. But they had not asked you to find the speed in meter per second. आपको बोला गया था कि आप स्पीड निकालिए लेकिन किलोमीटर पर आवर में निकालिए. ये होना चाहिए आपका किलोमीटर पर आवर में. तो राइट नाउ अगेन वंस अगेन इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस इनटू किलोमीटर पर आवर मैं क्या करूँगा? 15 को 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. देन इट विल गेट कन्वर्टेड टू किलोमीटर पर आवर. लुक एट द प्रीवियस वीडियो. ओके. सो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू 8 किलोमीटर पर आवर 18/5 और मीटर पर सेकेंड 5/18. 5 हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. 18 तिया 54. 54 किलोमीटर पर आवर. कोई दिक्कत कहीं पर कुछ नहीं. Isn't it? Now this train will pass a railway platform. ठीक है. तो कोई बात नहीं है. Now number 3, the same train, this is your train, and this train is passing a railway platform. For example ये railway platform हो जाए. यार प्लेटफॉर्म इतना छोटा क्यों होगा? ये हो गया railway platform. For example this is the railway platform. railway platform के लिए हम क्या करें? हम why not to take something else? Let me see if I can take something else. अगर कुछ नहीं है चलो कोई बात नहीं है. So for example let this be the railway platform. हाँ scale. This my scale will work. This is the railway platform and my train will pass this railway platform. तो बाबू in order to pass this railway platform it will pass the platform also, pass the length of platform also and its own length. क्योंकि इसको यहाँ से निकलना है ना. इसे यहाँ से निकलना है. यहाँ से. तो until and unless this particular train it covers its own length from here only then it will pass the whole platform. That is why when a train is crossing a railway platform, then in that case the total distance travel will be the length of the platform as well as the length of the train. ठीक है. आ जाओ. So in number 3 this says the length of the train is 120 meter long. Okay. Length of train is equal to बाबू 120 मीटर. और प्लेटफॉर्म का जाहिर सी बात है थोड़ा सा बड़ा ही ना रहेगा. ठीक है. नहीं तो आधा आदमी इधर आधा आदमी उस तरफ. प्लेटफॉर्म. सो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म is given as 160 meter. So total distance will be total distance थोड़ा सा ऊपर आ जाए. ठीक है. Total distance covered will be equal to 120 plus 160 is equal to 280 meter. This is the total distance covered by the train in order to pass the platform. अब क्या बोल रहा है? Time is given as 14 सेकेंड. तो जैसे ही टाइम इज गिवन एज 40 सेकेंड तो आप जो है can't you find the speed? Of course you can find the speed. So your speed will be equal to distance by time. Distance by time मतलब 280/14 कि क्या 14 seconds. Have a look. So 14 how many times? 2 times is equal to 20 ओहो सेकेंड नहीं बाबू 20 मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड. सो स्पीड इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड.
ठीक है, इतना रफ्तार से वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया. Now they are saying how long will it take to pass another platform which is 100 meter long. तो ये प्लेटफॉर्म को भूल जाइए. Now what are they saying? They are talking about another platform. तो another प्लेटफॉर्म भी अगर रहेगा, another प्लेटफॉर्म भी, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा. another प्लेटफॉर्म के लिए distance will be how much? So distance will be equal to the length of train plus platform. So length of train is equal to how much? Is already you know it as 120 meter, and the length of this particular platform is given as 100 meter long. यहाँ पे दे दिया है कि ये 100 मीटर का प्लेटफॉर्म है. So 120 plus 100 meter is equal to how much? 220. 220 meter is will be the distance covered by the train in order to pass this particular platform. और आपको स्पीड पहले से पता है, ये वाला स्पीड पहले से पता है, and you have the distance also. So can't you find the time? So time will be equal to your distance by speed. Distance कितना? 220 meter by 20 meter per second will be equal to 220 by 20 सेकेंड. टाइम है तो सेकेंड में ही होगा ना, मीटर पर सेकेंड और मीटर कैंसिल हो गया, सेकेंड. देखो यहाँ पे 11 टाइम्स इज इक्वल टू 11 सेकेंड will be the distance, will be the time taken by the train in order to cover this 100 meter platform, in order to cover or in order to cross this 100 meter platform. ठीक है, आगे आ जाइए. Similarly you have another sum, that is number 4. question number 4. Mr. Amit जी can walk 8 kilometer in 1 hour 20 minutes. अच्छी बात है भाई, जरा देखते हैं कि बच्चा का स्पीड क्या है. ओके, सो distance covered by Amit is how much? Is equal to 8 kilometer. Okay, and what is the time taken? So my dear, time taken is given as 1 hour 20 minutes. 1 hour 20 minutes means 1 hour plus 20 by 60 hour. So let's cancel. 21 times 23s are, मतलब देखा जाए तो 1, ये वाला 1 by 3, 1 by 3 आवर, मतलब कितना जी? 4 by 3 आवर. So I have converted this 1 hour 20 minute to hour. तो ठीक तो है, डिस्टेंस इज इन किलोमीटर और हमारा टाइम इज इन आवर. ओके, सो कैन यू फाइंड द स्पीड? रुको, पहले स्पीड निकालने दो मुझे. स्पीड will be equal to distance by time. Distance is equal to how much? 8 kilometer, and time is equal to 4 by 3 hour. 4 by 3 मतलब ये 3 चला जाएगा ऊपर. एक काम करते हैं 4 by 3. ओके, सी 4 by 3 is kilometer per hour. And how do you write this? As 8 by 4, 3 चला गया हमारा ऊपर, किलोमीटर पर आवर, that is 4 2 times और 3 2s are 6 kilometer per hour is the speed by which Amit covers a distance of 8 kilometer in 1 hour 20 minutes. ठीक है, अब कह रहा है how far does he go in 10 minutes. Now they have given you time. in number 1 में टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट. तो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस? डी इज इक्वल टू हाउ मच? तो ठीक है, माई डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. सो स्पीड इज इक्वल टू हाउ मच? स्पीड इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट. तो बेटा 10 मिनट को आप आवर में कन्वर्ट नहीं कीजिएगा,
So you will have to convert this into hour. So what will you get? What will you get? You will get, you can see, oh, 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 you, how much you will get? You will get as सब तो कट गया, 6 भी कट गया, so is equal to 1 kilometer. So in 10 minutes the Amit, not the Amit will cover a distance of 1 kilometer. कोई दिक्कत नहीं. दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन 30 सेकेंड्स. अच्छा कह रहा है, इस बार हम आपको 30 सेकेंड देते हैं. 30 सेकेंड में जरा सा दिखाइए तो इन 30 सेकेंड, वेट. सो हियर टाइम इज इक्वल टू 30 सेकेंड. तो जब टाइम सेकेंड में हो ना बेटा, तो स्पीड जो है ना, स्पीड हमारा होना चाहिए मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए, लेकिन है तो यहाँ किलोमीटर पर आवर में. तो क्यों, तो टेंशन काहेगा यार. 6 को इफ़ यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 5/18 इट विल गेट कन्वर्टेड टू मीटर पर सेकेंड. मतलब 6 या 18, 5/3 मीटर पर सेकेंड, 5/3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब क्या निकालना है मुझे? डिस्टेंस निकालना है ना. तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू वही स्पीड इनटू टाइम. बल्ले बल्ले हो गया, क्योंकि हमारा स्पीड जो है इज इन मीटर पर सेकेंड. 5/3 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 30 सेकेंड. दिस इज माय मीटर पर सेकेंड. 1 मिनट. मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय 30 सेकेंड. सो सेकेंड हमारा चला गया. 3 हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स. 5 10s are 50 meters. So in 30 seconds, Mr. Amit will walk how many? How many distance? He will walk a distance of 50 meter. ठीक है. अब कह रहा है कि this is in the same question they say how long will it take him to walk 2500 meter. याद रखना है, स्पीड आपका 6 किलोमीटर पर आवर है, या नहीं तो 5/3 मीटर पर सेकेंड है ना. आ जाओ, भूलेंगे हम लोग नहीं. क्या है कि स्पीड, एक लेट मी राइट दिस ओवर हियर. लेट मी राइट दिस दैट माय स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड इज ऑलरेडी गिवन एज या तो 6 किलोमीटर पर आवर, या नहीं तो और 5/3 मीटर पर सेकेंड. तो मुझे जहाँ जैसे ज़रूरत होगी वैसे मैं लूँगा. ठीक है. फॉर नाउ व्हाट आर दे आस्किंग? दे आर सेइंग हाउ लॉन्ग विल इट टेक. टाइम निकालो जरा सा. ये बी वाला में है, 4 का बी में टाइम निकालिए. इन ऑर्डर टू वॉक 2500 मीटर दे हैव गिवन यू डिस्टेंस एज 2500 मीटर. ठीक है. आ जाओ. तो बेटा जी, जब डिस्टेंस आपका 2500 मीटर है, तो कांट यू कन्वर्ट दिस इन किलोमीटर? कन्वर्ट कीजिए ना भाई. इसका मतलब है 2.5 किलोमीटर के बारे में बात कर रहा है, इजंट इट? 2.5 किलोमीटर के बारे में बात कर रहा है. सो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर. डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर. हमारा स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर. 6 किलोमीटर पर आवर. तो टाइम नहीं निकल जाएगा आपका. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. डिस्टेंस इज इक्वल टू हाउ मच? 2.5 किलोमीटर बाय स्पीड 6. देख लो यहाँ पे, ये हो गया 6 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, पर आवर, तो आवर चला गया मेरा, ऊपर चला गया. ये हो गया हमारा, कट गया. अब देखो यहाँ पर अगेन आई हैव ए प्रॉब्लम दैट कैन आई कन्वर्ट दिस आवर इन मिनट्स. अच्छा होगा. यू विल गेट सम, यू कैन से सम गुड होल नंबर. 2.5/6 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये 1 आवर है ना, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट. तो देखो बेटा जी, 6 10 जा 60, मतलब 2.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 25 मिनट. यानी इन ऑर्डर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2500 मीटर ही विल टेक 25 मिनट्स. कोई प्रॉब्लम कहीं पे? ठीक है. अब कह रहा है
कि find how long will it take him to walk 6.5 किलोमीटर, isn't it? अब कर रहा है बी का नंबर 2 में बता रहा है कि दे हैव गिवन यू डिस्टेंस ऑफ 6.5 किलोमीटर. तो ठीक है यार, डिस्टेंस इज इक्वल टू 6.5 किलोमीटर. सो व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल टू 6.5 किलोमीटर, तो हमारा कर रहा है टाइम जरा निकालो. तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक. तो हाउ लॉन्ग मीन्स टाइम. सो टाइम इज इक्वल टू हाउ मच. तो टाइम इज इक्वल टू सेम. Time will be equal to distance by speed. You already know the distance as 6.5 किलोमीटर. और आपका स्पीड क्या है, ये 6 किलोमीटर पर आवर है. तो आ जाइए ये वाला 6 किलोमीटर पर आवर मीन्स आवर विल गो ऑन द टॉप. किलोमीटर गया 6.5 डिवाइडेड बाय. So the simplest way to solve this 6.5 by 6 hour is, let me take a red pen. Okay, so 6.5 by 6 hour will be equal to how much? It will be equal to 65 by 60 hour. And when you have time in hour, when you remove this particular decimal, तो वो नीचे आएगा 65 by 60. Now how do you convert hour into minutes? By multiplying it by 60. So when you multiply this by 60, you will get your time in minutes. That is equal to 65 minutes. I hope this is quite clear. In fact, 100% clear. Therefore, do not divide 6.5 by 6. Just remove the decimal. It will be 65 by 60 hour. Change hour to minute by multiplying it by 60, which is equal to 65 minutes. ठीक है. Number 5 में they are asking you which is greater, a speed of 45 kilometer per hour or a speed of 12.5 meter per second in number 5. Okay, what are they saying? They are saying that I am giving you a speed of 45 है ना जी, 45 किलोमीटर पर आवर and a speed of 12.25 meter per second. So why not to convert this kilometer per hour to meter per second? And how are you going to convert it to meter per second? By multiplying it with 5 by 18. It will get converted to meter per second. अब सिंपल सा आप सॉल्व कीजिए ना. 9 2 times and 9 5s are 25 by 2. So beta ji, have a look. 25 by 2 will be equal to how much? It will be 12.50 meter per second. Now it's quite visible that 12.50 meter per second, this is greater than 12.25 meter per second. So you can say that 45 kilometer per hour is greater than 12.25 meter per second. ठीक है, आगे बढ़े. So let us, and what are they asking here? How much is the distance traveled by each in 2 seconds? अच्छा, what do you mean by how much is the distance traveled by each in 2 seconds? तो चलो कोई बात नहीं है. So distance traveled in 2 seconds. Over here this one, और यहाँ पर भी distance traveled in 2 seconds. This means time has been given. Here you can say time has been given. Here also time has been given. You will have to find the distance. So beta ji, distance is equal to speed into time. Can you please multiply 12.25 by 2 to get the distance in meter? Multiply करो, कितना हो गया? 12 2s are 24
24.50 मीटर. एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे. Okay, similarly over here, what will be the distance? Distance will be equal to speed into time. That is, speed है यहाँ पे 12.50 multiplied by 2. You will get your answer in meter. Let's multiply. 12 2s are 24 plus 1 will be equal to 25 meter. So